Preeti ma'am, can you think of more? My responsibility as a daughter-in-law provide care. Okay. Right. Great. So I'm glad that you have taken a risk to at least make sentence structure on your own. And that is what I wanted to see, how independent you people have become. And you have become independent to quite a good extent. I will just give you a little bit of portion. I think you can fly very well. So let us start with our today's class. Priya Singh, my responsibility as daughter is to take my family and fulfill her dream. So this is the problem only, Priya. I think I pointed in the feedback also. You need to study the, words like his, our, her, their, and use it appropriately, which you are not doing right now. So please give it a revision. Okay. Now, currently we have this topic, obligations and duties that we follow. So I'll show you something here. Bhavna ma'am, Ji, ma'am. homework. I have forgotten. Okay, now I'm in flow. So would you mind in case I check it towards the end? Okay, ma'am. Okay, so here are your responsibilities. Muskan is writing, my responsibility as a daughter, my duty is better future for my side parents. Okay. Some language correction is required, Muskan. So responsibility, हम लोग basically जो words देख रहे हैं, जो sentences देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम कैसे अपनी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी औरों को बता पाए कि मैं ये करती हूँ. क्या वर्ड्स हमें हेल्प करेंगे, कौन से वर्ड्स हमें हेल्प करेंगे ये बताने में कि मेरा ये काम है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? फॉर दैट मैटर आई हैव आस्क्ड यू कि आप अपनी कोई भी पोजीशन लीजिए, आपने डॉटर इन लॉ या डॉटर की तरह या एक मदर की तरह यहाँ पर अपने सेंटेंसेस लिखे. सो हम अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज को कुछ लेवल्स पे डिवाइड करेंगे. एक लेवल है हमारा पर्सनल लेवल, दूसरा लेवल है हमारा वो लेवल जिसमें हम हमारी ड्यूटी बनती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को वैल्यूज दे पाए. तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है. पर्सनल से मेरा मतलब ये है कि हम किसी को एक कहते हैं ना, मैं पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी कि अगर कोई गलत रास्ते पर है या किसी को मेरी जरूरत है तो पर्सनली मैं उसको गाइड कर सकूं या जनरल लाइफ में भी उसको गाइड कर सकूं. तो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक है हमारी ऑफिस या जो हमें भगवान ने रोल दिया है, आइदर एज अ मदर और एज अ जॉब होल्डर. तो वो हमारी ड्यूटी है. ड्यूटीज में भी हमारी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो उस लेवल पर भी साथ ही साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम अपनी, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपना ख्याल भी खुद ही रखना है. तो जहाँ पे आपके लाइफ की सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कई लेडीज हैं या कई लोग हैं जो अपना खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, फिर एंड में दे जनरली फॉल सिक, है ना, और फिर उनसे काम नहीं होता है. तो ये जो है 4 लेवल पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर रहे हैं और देर आर सर्टेन वर्ड्स which will describe the responsibility how you are carrying it out. हमारी स्पोकन इंग्लिश के अंदर अनफॉर्चुनेटली इन कुछ एक आधे में डिफरेंस ज्यादा नहीं समझा जाता, जस्ट बिकॉज वो स्पोकन बहुत सारे लोगों का ग्रामर क्लियर नहीं होता और वो स्पोकन में एक दूसरे को एक जैसा ले जाते हैं. बट हम यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी करेंगे एंड देन इट्स अप टू अस कि हम किस तरीके से यूज करते हैं. सो पर्सनल एडवाइस या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जो शब्द आप यूज करते हैं वो है शुड. ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दूसरे को सलाह दूं, पर वो सलाह सिर्फ मैं अपने ही सर्कल वाले लोगों को देती हूँ. सो आई वुड से टू माई सन ओनली, यू शुड ड्रेस अप प्रॉपरली फॉर द स्कूल or for the occasion.
अब बिकॉज ही इज इन माई इनर सर्कल तो मैं उसको एडवाइस कर सकती हूँ, बट मैं किसी और के बच्चे को, चाहे वो मेरे फ्रेंड का ही बच्चा क्यों ना हो, मैं उसको एडवाइस नहीं कर सकती, राइट? It would be probably hurtful for them, or probably kind of interruption for them, so they don't want. बट अगर आपका फ्रेंड, आप उनसे बहुत क्लोज हैं, आप उनकी परवाह करते हैं, तो स्टिल यू कैन यूज शुड, लाइक यू शुड wait, you should exercise to reduce. तो आपको पता है कि ये पर्सन बुरा नहीं मानेगा, आपका इनर सर्कल का ही पर्सन है, तो आप इसको शुड करके यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप खुद के लिए भी एक, हम सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उसके लिए भी आप शुड यूज कर सकते हैं। आई शुड गेट अप ऑन टाइम, है ना? वी आर नॉट कन्वर्टिंग इन हिंदी, हम शुड को हिंदी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बट मुझे ये आपको पास अक्रॉस करना है कि शुड आपकी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एरिया है एडवाइस देने का, वो आप शुड के थ्रू निभा सकते हैं। एक और यहाँ पर है हमारा, ये तो पर्सनल एरिया आ गया, लेकिन हम लोगों का भला करना भी नहीं छोड़ते, है ना? हम उनको भी बोलते हैं कि आप भी ये जरूर करो। तो हम लोग जनरल गुड के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं, तो उसमें मस्ट आ जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर हम पब्लिक को कोई बात बोलते हैं, अब हम सबके कान में जाकर नहीं बोलते ना कि यू मस्ट, यू शुड वेयर सीट बेल्ट। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, सबको पर्सनली नहीं कर सकते, और किसी को बुरा लग गया तो वो बोले, प्रोबेबली दे माइट हैव मेनी कमेंट्स टू से। तो वो द गवर्नमेंट हैज डन समथिंग वेरी वंडरफुल, दैट इज, उन्होंने तो पूरा बोर्ड ही दे दिया दैट द ड्राइवर मस्ट वेयर सीट बेल्ट्स, ठीक है? बट जैसे इंग्लिश चेंज होती गई, मस्ट का मीनिंग जो है बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक जरूरत की फॉर्म पर चला गया कि यू मस्ट ट्राई इट, हम ऐसे बोलते हैं, यू मस्ट ट्राई इट, जरूर करो, है ना? तो एक एडवाइस तो दे ही रहे हैं, पर उसके ऊपर जरूर का ठप्पा लगाकर भी दे रहे हैं, और हम ये अपने पर्सनल लोगों के साथ भी अब यूज करने लगे हैं, यू मस्ट ट्राई इट। उससे उनको लगता है कि ये जोर देकर बात कर रही है, तो जरूर कुछ इसमें अच्छा होगा। यू शुड ट्राई हम उसमें यूज फिर नहीं करते, शुड का जो वेट है वो हल्का पड़ जाता है। मस्ट ट्राई से इट टर्न्स आउट टू बी बेटर। हम फीडबैक्स में भी दिखते हैं कि अगर हम कोई होटल्स वगैरह जा रहे हैं, तो ओवर देयर नीचे लिखा होता है इट्स अ मस्ट ट्राई डिश, सो इट इज लाइक दैट ओनली। पर आज मतलब जो जनरल यूसेज है वो यही है कि जब आप सबको अकेले जाकर नहीं बोलते हैं, या आप अपने सिर्फ फैमिली सर्कल तक ही सीमित नहीं रहते हैं, आप और लोगों तक भी ये मैसेज देना चाहते हैं, तो आप उसको मस्ट की फॉर्म में लेकर जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा और वेट है। मॉरल ड्यूटीज इज अप्लाइड फॉर एवरीबडी, तो इसके लिए जो शब्द यूज होता है उसको हम बोलते हैं ऑट टू। OUGHT इज एन ऑट, ओके? ऑट मीन्स ये आपकी वैल्यूज हैं, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि मैं आपको ये सिखाऊं। आई शुड टीच यू दिस थिंग, सो वी यूज द वर्ड ऑट टू। सो लाइक ought to you ought to take care of elderly, बड़ों का ख्याल करना आपका, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये आपके संस्कार का पार्ट भी है। सो दैट इज मॉरल, राइट? Similarly, you ought to respect your elders or your national flag, anything which comes as a great respect, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे के अंदर आ जाती है, तो आप उसको ought to से रेफर करेंगे। अब हम यहाँ अगर बोलेंगे you should respect your national flag, तो उस केस में तो चल जाएगा जब तक अब आपको लैंग्वेज नहीं आती थी, पर अब आपको पता है मुझे ought to कहाँ यूज करना है, तो you ought to follow the traffic rules, right? और you must follow traffic rules, ये interchangeably भी हम यूज कर सकते हैं। या you ought to respect the rules of your college, you ought to touch the feet of your principal, anything like that, okay? Now duty, अब ड्यूटी से तो भाग नहीं सकते, because of duty only वी आर लिविंग हैप्पीली। आप सोचिए एक बार को कि अगर आपके हम डेली रूटीन से ड्यूटीज ही निकाल दें, तो आपके पास क्या बचेगा? आई वॉन्ट टू हैव द आंसर। अगर हम डेली ड्यूटीज आपके रूटीन से निकाल दें,
तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा? You can write your answer in the chat box or unmute and speak. Duties as a daughter, mother, whatever duties you are doing, a student or whatever. मैम Yes. आप अपने लिए टाइम निकल जाएगा, सारी ड्यूटीज हटा दो तो। ओके, तो ये आपको 1 हफ्ते तक अच्छा लगेगा शायद, यस मैम। फिर उसके बाद बैक टू पवेलियन। नो, अभी भी आप सोचो, मतलब आपकी लाइफ से ड्यूटीज माइनस हो गई हैं, तो फिर क्या लगेगा? तो मैम घूमो फिरो मौज करो। तो घूमने फिरने We के feel लिए uncomfortable. मनी, freedom. It's फ्रीडम, uncomfortable. सॉरी, It's uncomfortable. व्हाई विल इट बी अनकंफर्टेबल? It creates many problems, लाइक like if we don't complete our responsibility, so it Our कहीं ना कहीं वो person, barrier him हमें person are pushed. create करेगा, सॉरी वर्षा, वुड यू माइंड रिपीटिंग? कहीं ना कहीं वो चीजें हमें बैरियर देंगी. Okay, in some ways it will be a barrier for us. Okay, for very temporary moment, if we think it feels like much realized, because right now Preeti ma'am has got a lot of burden. See, she actually is thinking in that zone when the responsibility would end. Okay, so she's already in that zone, and she would feel relaxed at certain point of time. Okay, and but if we assume that now the responsibilities are gone, okay, do not think that your children, I mean, your responsibility as a mother is also to give food to your children. That is Yes, your ma'am. duty. You Yes, would, ma'am. you're not going to give it to them. Your duty as a wife, of course, is to offer food to your husband and Yeah, serve to something, support in every situation. right? Clean your home also. There are other things which Yes. we automatically, we are on automatic mode, we start doing it on your own, but it is also a part of our duty. How long can you sit in your home in freedom? And you say that फिर तो घूमना फिरना होगा and all those things. For घूमना फिरना also you need to have some money. Money comes from your office duty. So as a teacher also you have a duty. You would not go to any duty anymore. Understand this thing. So it's a complete circle, right? So spiritually saying, duties are nothing but our karmas, which we Karma, have yes. to do. Okay, so यस मैम। due to these karmas only, due to this have to wala responsibility only, we will free ourselves. हम अपने आप को free ही in duty से करते हैं. And it's, you should be very fortunate. अगर हम दूसरी तरीके से सोचें, अभी तो हम बिल्कुल ह्यूमन वे में सोच रहे हैं, बट अगर हम दूसरी वे से सोचें तो ये ड्यूटीज की वजह से ही है जो आपका दिमाग दूसरी और गलत डायरेक्शंस में नहीं चल रहा. These duties are only channelizing your brain in the right direction, and that is somehow is giving you positive results. Okay, so अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप बड़े अच्छे मन से बना रहे हैं, या आप किसी की सेवा भी कर रहे हैं, like you are already taking care of elderly people, प्रीति मैम, तो these are all your duties जो एक समय पर yes overburden हमको कर देती हैं, but that is again to become a better person. You will come out as a better person only. So you have to do this. ये आपकी responsibility और करना ही होगा. It's like have to. यहाँ पर आपको सराउंडिंग्स पकड़ के रखती हैं कि अब ये तो करके ही रहेगी, या तो इसको करना ही है, इससे इसको बाहर नहीं निकलने देंगे. सो यू हैव टू डू इट, और आप इससे बच नहीं सकते. एंड और हैव टू ड्यूटी से अगर आप बचते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैव टू ड्यूटी से आप बचते हैं, तो इसका बाकियों का कोई रिजल्ट नहीं होता, इसका रिजल्ट पक्का आता है. सो हैव टू वाला, सो लाइक आई हैव टू रीच टू माई ऑफिस ऑन टाइम. अगर मैं नहीं पहुंचूंगी तो मेरा सैलरी घटेगा. I have to give food to my kids. अगर मैं नहीं दूंगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे. Okay, I have to reach home on time. अगर मैं नहीं पहुंचूंगी तो मेरे मम्मी पापा का दिमाग उल्टे डायरेक्शन में जा सकता है. Okay, so these are have to related to your life. आपकी ड्यूटी से जुड़े हुए हैं ये, राइट? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. और सर्वाइवल यानी कि आपको खुद का भी ख्याल रखना है, तो उसके लिए वी हैव द वर्ड नीड टू. Okay, Necessary. yes, it is necessary for life's existence or the conditional existence. Like I
नीड टू, मैं बहुत बेसिक से लेके चल रही हूँ एज घर के काम से ही रिलेटेड करके. सो आई नीड टू मेक अ डिश फॉर डिनर. अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी कि मुझे कोई खाना बनाना है, तो ऑब्वियसली मेरे सर्वाइवल पे बात आ जाएगी. भूख लगेगी, ऑब्वियसली एक ऑर्गन है मेरी बॉडी के अंदर जो कि सफर करेगा. अल्टीमेटली सर्वाइवल में एक माइनस हो जाता है. और ऐसे धीरे धीरे करके मैंने रात का खाना बनाना ही छोड़ दिया, सबको आदत हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा. सो इट्स अ नीड टू. अगर आप सर्दी में कहीं जा रहे हैं, तो यू नीड टू कैरी वार्म क्लोथ्स. अगर आप नहीं कैरी करेंगे आउट ऑफ मे बी इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, सो ऑब्वियसली आपको जुकाम हो सकता है, यू विल फील कोल्ड, ओके, एंड यू विल फॉल सिक, सो यू नीड टू. ओके, सिमिलरली कई सिचुएशंस होती हैं जहाँ नीड टू और हैव टू दोनों मर्ज हो जाते हैं. जैसे कि आई नीड टू कंप्लीट दिस वर्क. अब मैंने ये काम नहीं करा तो मेरी जॉब चली जाएगी. पर हैव टू मैं कर सकती हूँ, आई हैव टू कंप्लीट दिस थिंग. करना ही होगा, ये मेरी ड्यूटी है. नहीं करूंगी तो प्रोबेबली मेरे को प्रमोशन ना मिले, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इज अ ड्यूटी पार्ट. तो ये ओवरलैप भी कर सकते हैं, नीड टू एंड हैव टू. सो दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशन. अब इनको हम इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं इन सारे वर्ड्स को? दे ऑल आर मॉडल्स. ओके, और मॉडल्स जनरली कैसे आते हैं? आपका सब्जेक्ट लगता है, कोई भी सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट एज इन आई वी यू दे ही शी इट या कोई भी नाम, साथ में आपने लगाना है मॉडल और साथ में लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, आई आई हैव टू टेक योर क्लास. अगर मैं आपकी क्लास नहीं लेती हूँ तो क्या होगा? आप भी ढीले पड़ जाएंगे, मैं भी ढीले पड़ जाऊंगी. अल्टीमेटली जो रिजल्ट हम लोग देखना चाहते हैं वो हमें नहीं दिखेगा. सो आई हैव टू टेक योर क्लास. इस सिचुएशन में मेरे लिए ये नीड टू भी है. क्यों? बिकॉज दिस इज माई इंस्टिंक्ट विच वांट्स कि आप लोग ग्रो करें. दिस इज माई इनर इंस्टिंक्ट. सो आई हैव टू सपोर्ट दैट ऑल्सो. सो आई हैव टू टेक योर क्लास. ओके, got my entire this bunch of models? Got it? Yes, ma'am. Everybody, is it clear? Yes, ma'am. Muskan, is it clear? Yes, ma'am. Leena? Yes, ma'am. Pia? Okay, she has just typed it. Now comes the main activity. So we will move ahead. Discuss few jobs that you do every day for others. Okay, औरों के लिए क्या करते हैं आप? जो अभी आपने लिखा, ठीक है ना, एज अ डॉटर एंड ऑल. तो आई अभी जो आपका क्रिएशन था सेंटेंस का, इट वाज लाइक माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर, टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड. यू हैव रिटन, प्रीति मैम, is to take care of my child. Leena has not written complete sentence, she has just put pointers. Okay, similarly for Varsha, proper sentence is not created, and Preeti ma'am has done it the second time correct, and Priya has also done it correctly. Now I want you to do this thing. Discuss few jobs that you do for others every day. Subject, verb, object. Please do that. No models in between, please. No models, but what you do on everyday basis. Just like this. Write that. 2 to 3 things if you manage to write. Looking forward for your response.
Waiting for your chat response. Where has the screen gone? Recording in progress. Okay. I close. Varsha, you should say I closely observe my daughter. I closely observe my Okay, daughter. ma'am. Okay. Okay, ma'am. This is really a very awkward situation for me. I cannot see anything on the screen and I'm just hearing to the voice. I do not know how to, do the things. Okay. Oh, it has got the screen on the other side also. How would I change the screen now? Even my scroller is not visible on the screen. Otherwise, I would have done it. Chalo. Anybody else to respond in the chat box? Read novels every day for my vocabulary growth. Okay, you read novels for your vocabulary growth. Okay. Others, please respond.
I can see only Varsha's and Priya's. I help my mother in households. Okay, right. Now tell me, the tasks that you are writing, are they your duty which is forced upon you, like with have to kind of thing, or do you do it by heart? Muskan, you might have sent it earlier, but now I have joined through mobile device in which I cannot see your response. Okay, Preeti ma'am is saying, I get up early in the morning, I cook food daily, I go to college every day. Out of these three sentences, which one do you think is your, a forced duty for you? With through that you will be writing a have to wala sentence in it. Okay, like I have to go to college on time. Okay, ma'am. Prepared or prepare, Muskan? I prepare food for my parents. So do you think this is your duty wala responsibility, or this is something you are doing out of your will? If you are doing it out of your will, khud se kar rahe hain and you enjoy, you just write, I prepare food for my parents, which you have already written. And if it is a duty kind of thing, I have to do that. Yes, Lena has written, I have to attend my classes to get 75% attendance. I have to reach college every day on time. Very good, Preeti ma'am. Varsha, anything with have to? I have to join class every day in evening. Yes. It's a duty. It's your duty to join the class all time. Because if you don't do that, you would not be able to get success in whatever area you want. And now write the responses for the moral responsibility, because I cannot show you the screen as of now. I'm really helpless. So please use moral responsibility word that you think are the part of your values, and it's your responsibility to transfer it to other people. I have to work on my project daily in order to build my skills. Yes. Yes. You can also write like juniors ought to respect the seniors. I have to help the general physician to better understand patient's problem. Yes. I have to teach lecture every day in institute. Okay. I have to deliver a lecture.
You ought to respect your job responsibility and complete your work timely. Yes, correct. Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, I can't hear you properly. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay, so I was saying that yes, it's a homework time. 15 minutes are left, wherein you can share your homework. And I think all good sentences are coming up as of now for ought to and have to. Start sharing your homeworks, please. Excuse me, ma'am. Yes, Lena, I have a doubt. tell me. Instead of will, we can use would to. Would you is generally asking for a kind of favor. Would you mind closing the door? Okay, would you I have like to I come? have It's a written a preference. sentence. I have written a sentence. I'm going to the zoo with my family. Would you like Hmm. to go with us? Is it Yes. correct or So it's not? a wish. It's a wish and it's a preference. So you can use it Oh, correctly. Would you like to do this? Okay. oh, Would you like to okay, Would have you ma'am. like pizza? 2 cup of coffee? Would you like to have a cup of coffee? Yes, for the preference case, Okay, ma'am. right? Now, can I have the homework? Yes, Ma'am, in ma'am. Yes, imaginary ma'am. form or audio? Yes, Varsha? I didn't hear you properly. Varsha, Yes, ma'am. what were you saying? Ma'am, homework in imaginary form or Imagine voice? voice. Image. Okay, ma'am. May I? Yes. Going to plus verb first. I'm going to cook rice in dinner. Hmm. Second, I'm going to wear night dress. Hmm. Third, I'm going to tell you about my topic. Hmm. Fourth, I'm going to represent my project. Very good. Fifth, my husband is going to attend a meeting. Right. That's it. Another, no ma'am. I'm preparing for worship. Will you involve in Sparkle the Holy Fire? Hmm. Second, I'm kneading the dough. Will you help me to prepare the food? Very good.
Third, she is solving the math equation. Will you tell her some easy tricks? Hmm. Fourth, he charging his laptop. Will you press the button? Hmm. Fifth, I am attending Talking Tom A1 class every day. Will you be my favorite teacher? That's it, ma'am. Very good, Varsha. I think language absorption become easier when you relate with your real life things, and sentences become much clearer if you really observe your situations in the mind, and based on that you make sentences. And this is what is your work is all about, imagining the real life situation and then making the sentences. So this is the beauty of your homework. Very nicely done. Thank you, ma'am. Preeti ma'am. Okay, Muskan. Yes, Yes, ma'am. yes. I'm preparing food for my son. Hmm. Will he taste come to tuition? Could you repeat and speak loudly? I am preparing food for my son. Hmm. Will he taste come to tuition? Will he taste come to tuition? What does it mean? हम इसको कैसे बनाएंगे कि वो आने के बाद उसे टेस्ट करेगा ट्यूशन से? आप जो बना रहे हो ना क्वेश्चन, जो विल से जब भी स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या वो क्वेश्चन करेगा? क्या वो टेस्ट करेगा आने के बाद? तो कैसे बनाएंगे मैम Will इसे? he taste it? Will he taste it? टेस्ट इट इनफ हाँ, फॉर that's it. ट्यूशन ट्यूशन नहीं आएगा. नहीं, will he taste it? ओके. आई एम Hmm. गोइंग टू मार्केट. विल यू गो टू मार्केट विद मी? Will you come to market with me? जब आप दोनों ही जा रहे हो तो कम हो जाएगा ना, गो नहीं होएगा. ओके. आई एम डूइंग माय स्कूल होमवर्क. विल यू कम एट माय होम? Okay. Or will you help me in my homework? Okay. I am Hmm. enjoying the wedding. Hmm. Will you come enjoy wedding with me? Will you come with me again? Or will you enjoy the wedding with me? ठीक है. Next. I am purchasing watch. Will you Hmm. purchase watch with me? उसको उसका भी खर्चा बढ़वा रहे हो, खुद को तो बढ़वाया क्यों है? ठीक है. ओके. वो कहेगा कि चलो मैं शॉपिंग करने तो जा रहा हूँ एंड यू विल बाय अ वॉच फॉर मी, है ना? व्हाई वुड आई स्पेंड मनी? नेक्स्ट. 5 sentence prime. ठीक है. थोड़ा सा मुझे लगता है अभी मेच्योरिटी ऑफ सेंटेंसेस की अभी जरूरत है. अभी मेच्योरिटी आनी है सेंटेंसेस में. अभी वो बात नहीं आ रही मुस्कान. मे बी इट्स लैक ऑफ प्रैक्टिस, और उतना टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ लिखने का. Yes, ma'am. एक्सक्यूजेस ये सारे, मतलब अभी मैं कहूंगी कि एक्सक्यूजेस ही हैं, क्योंकि अगर हमें करना है तो हम थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और उस लेवल तक पहुंचेंगे. वी कैन टेक बिगेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम प्रीति मैम. Yes, ma'am. ठीक है ना? तो मैम कोशिश करो. मतलब चाहे मुझे जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, मुझे रहना आपके साथ ही और मुझे करके ही रहना है. हाँ जी, बिल्कुल करो. इवन आई एम विद यू, Yes, बट ma'am. इंटेंशन ना थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करो, है ना? Yes, ma'am. जितने, और उस टॉपिक को रिपीट करो अच्छे से, ताकि मतलब वो अच्छे से दिमाग में जाए, और पूरा फोकस लगाकर जिस भी क्लास में हो पूरा फोकस से पढ़ो. इनअटेंटिव मत हो, है ना? Yes, ma'am. ठीक है. Thank you, ma'am. प्रीति मैम. Yes, ma'am. I'm going to the market to buy vegetables. हम्म. I'm going to the temple for pray. फॉर प्रेइंग. I'm going to the park to walk with my pet. ओके. My FDP is going to end. ओके. And I'm going to airport with my family. आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आप ऑन द वे हैं और एयरपोर्ट आप जा रहे हैं, है ना? इट्स नॉट फ्यूचर ओरिएंटेड. Yes, ma'am. Okay, ma'am. नेक्स्ट. I'm making a team for group discussion. Will you join my team? Will you join my team? ओके. I'm preparing a software for keeping the record. Will you help me? वेरी गुड. I'm cooking a food for my family. Will you taste the food? वेरी गुड. I'm completing my French homework.
will you help me to complete my homework? Very nice. When my friend is reaching at home, will you call me? No. When my friend will reach home, will No, you call me? reaching नहीं आएगा मैम. नहीं नहीं नहीं, जब वो पहुंचेगा, पहुंच रहा होगा नहीं, पहुंचेगा. हाँ. When my friend will reach home. My friend will. Okay, ma'am. हाँ जी. Okay, ma'am. Done? Then Good sentences. Very nice. Leena, Yes, ma'am. please tell I'm me. I'm planning for a dinner. Will you be able to join the dinner? Okay. I'm going to study tonight. Will you come to study with me? पहले night shoot बदल. पहले night shoot था. Preeti ma'am, please mute yourself. I am going to study tonight. Will you come to study with me? Hmm. We are going to visit many places on our trip. Will you come with us? Very good. I am going to buy a new phone tomorrow. Will you help me to select the good one? Hmm. I am going to the zoo with my family. Would you like to go with us? Okay. I am going to take my dog to vet. Will you come with me? I am going to vet. Take my dog to vet. Okay. I am unable to connect my database. Will you help me in connecting that? Yes. Good. Yes. That's it. Yes, ma'am. Very good, Leena. Very nice sentences. Quite organized and meaningful too. So I think this is a well done task. And homework for today, I would not be able to write it here, but I would request you to write it in your notebooks or wherever you are writing it and post it on the group also. So the homework is that you are supposed to write 5 sentences with the model need to, wherein your survival is there. Okay, need to and must. Need to and must. Must is for general. जब हम publicly कुछ announcement करते हैं, सबको पता होना चाहिए ये चीज. So it's a must wala and need to. 5 sentences from both. Right? And kindly take it as your responsibility that you must post it on the group. Right? Any doubts in any of the models of responsibility? Ma'am, going to plus verb. I am going to airport tomorrow. This is present Is it continuous. right? No, no, no. I'm going to airport. यहाँ पे airport is not a verb. Airport is a place. I'm going to visit airport. I'm going to travel to airport. Okay, ma'am. Yes. Right? To pick my friend. Yes. I'm going to travel to airport. Or I'm going to visit the Okay. airport to pick my friend. Okay, ma'am. Thank you. Any other doubt? No, ma'am. Okay. Anybody else has any doubt? No, ma'am. All right then. I shall see you on Monday. Okay. Yes. Thank you so much. I hope everybody has got the feedback of assessment. Is anybody left? no, ma'am. Okay. Right then. Thank you so much. I shall see you soon. Bye-bye. Bye. Bye, Bye. ma'am. Good night. Good night.